Hello, my dear students. Jai Jagannath. Welcome to the session. So today we are going to study about B.Ed first semester social pedagogy unit 2 हमें start करिबा aims and objective and academic standard of social science. Okay. So look at our syllabus कौन रही छी 2.1 measure aims and objective of teaching social sciences 2.2 रे Bloom's taxonomy of educational objective 2.3 रे academic standard and learning outcomes of teaching social sciences 2.4 रे recommendation of NEP 1986 NCF to 2005 APSCF 2011 then value of teaching social sciences. Okay, so ये सब विषय आज डिस्कशन करिबा सब कुछ कंप्लीट करिबा. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट हम जानिबा 2.1 रे मेजर एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग सोशल साइंस. ओके, मेजर एम और ऑब्जेक्टिव कौन रहउची हमरो माने सोशल साइंस रे. ओके, सो व्हाट इज एम? एम कहले हमें कौन बुझिबा द एजुकेशन कमिशन जोटा कि 1984 66 रे इतला आउटलाइन इतला द रोल ऑफ सोशल स्टडीज तांको हिसाब रे द रोल ऑफ सोशल स्टडी आज द एम ऑफ टीचिंग सोशल स्टडी इज टू हेल्प द स्टूडेंट टू एक्वायर नॉलेज. ओके, आमर किसी एम थिले किसी उद्देश्य थिले ही आमे सेई विषय नॉलेज को एक्वायर करिया को चेष्टा करिबा. किछिटा गोटे आमर उद्देश्य थिले ही आमे ता विषय जानिबा को चेष्टा करिबा. सो एम इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स इन आवर लाइफ, so which we can study in about various standard and various particular subject. Okay, so देखो आम फर्स्ट आम लाइफ रे आम किसी एम रखिले ही आम आगो को बढ़ी पारिबा. बिना एम रे आम किसी जिनस ऊपर नॉलेज के एक्वायर करिया को चेष्टा करबा नाही. ओके, सो एजुकेशन कमिशन 1986 जोटा कि हम कोटेड कमिशन मध्ये कहूचे. ओके, सो 1984 66 आउटलाइन द रोल ऑफ सोशल स्टडी एज द एम ऑफ टीचिंग. सो से हिसाब रे एम ऑफ टीचिंग कौन ना सोशल स्टडी इज टू हेल्प करिथाय कोथरे स्टूडेंट मानकु नॉलेज एक्वायर करिवारे. ओके, देन डिटरमिनेशन ऑफ एम इज नेसेसरी फॉर एवरीथिंग इन द लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल एबिलिटी. ओके, डिटरमिनेशन द्वारा कौन होता है ना एम को नेसेसरी भाव में नहीं था आम लाइफ रे जो कि कौन ना इंडिविजुअल एबिलिटी आम जानिया को पाई था जे आम भितर केते पोटेंशियलिटी अच्छी आम भितर केते डिटरमिनेशन अच्छी जे आम निज एम को आम क्लारिफाई करि परिबा आम एम हिसाब रे आम नॉलेज को एक्वायर करि परिबा बोली. ओके, वी कैन नॉट प्रोसीड आवर लाइफ विदाउट एन एम. ओके, आमे आम बिना एम रे केबे भी आम लाइफ को प्रोसीड करि परिबा नाही. टू अचीव सक्सेसफुल इन आन एक्टिविटी क्लियर एम इज नीडेड. ओके, आम जदि गोटे सक्सेसफुल हवा को चाहिए आम लाइफ रे आम एम को आगे आम क्लियर करिया को चाहिए. बिना उद्देश्य आम किसी भी जिनसर उद्देश्य नथिले ही आम किसी जिनसर कारण पाइबानी. ओके, आम किसी जिनसर न्यू माने इन्वेंशन करिया को चेष्टा ही करिबानी किसी नॉलेज जानिबा को माने हमर इच्छा ही हेबनी. तो उद्देश्य थिले ही आम किसी नॉलेज को एक्वायर करिया को चेष्टा करिबा. ओके, जदि आम चाकरीटे पाइया को चेष्टा करूचे बा आमर उद्देश्य रहउची जे आम गोटे गवर्नमेंट जॉब पाइबू. ओके, तो तापे कौन आमर माने जदि सेटा आमर एम रहउची जे गवर्नमेंट जॉब तापे आम पढ़ापढ़ी करिया को चेष्टा करिबा. ओके, सेही हिसाब रे सिलेबस को मेंटेन करिबा सेही सब्जेक्ट वाइजली आम पढ़िया को चेष्टा करिबा. ओके, किछि उद्देश्य थिले ही आम किछि जिंस को नॉलेज को एक्वायर करिया को चेष्टा करिबा. देन what is objective? Objective कौन? Then the objective of social science is to develop the individual ability. Okay, objective होउछ कोटे एमती का जिंस सोशल साइंस हिसाब रे कौन ना हम इंडिविजुअल एबिलिटी को आम केमती एनहांस करबा किंतु डेवलप करबा. ओके, केमिति गोटे आम निज पोटेंशियल को केमिति आम कोन करबा ना ग्रोन अप करबा. ओके, देन टू कंट्रीब्यूट द सोसाइटी एक्सप्लोर द अंडरस्टैंड द नेचुरल सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट. ओके, जोटा कि कौन ना सोसाइटी रे कंट्रीब्यूट देथाउ आम निज एक्सप्लोरेशन को हमर अंडरस्टैंडिंगनेस को हमर नेचर सोशल साइंस को कल्चरल एनवायरनमेंट को. ओके, देन difference between aims and objective कौन ना aims is an ultimate goal which individual or group want to be achieved. ओके, aims होजी कौन ना गोटे ultimate goal जोटा कि कौन ना इंडिविजुअली आ ग्रुप हिसाब ले हमें ताको अचीव करिया को चेष्टा करथा. बट ऑब्जेक्टिव कौन ना गोटे स्पेसिफिक गोल अन इंडिविजुअल वांट टू बी अचीव्ड. हैला, ऑब्जेक्टिव होजी गोटे स्पेसिफिक गोल और एम्स होची गोटे इंडिविजुअल बा ग्रुप गोल भी हेई पारे. बट ऑब्जेक्टिव गोटे स्पेसिफिक गोल जोटा कि इंडिविजुअल वांट टू बी अचीव्ड इंडिविजुअल हमें अचीव करि परिबा. ओके, देन लॉन्ग टर्म आउटकम जोटा कि हमर एम रे हेई थाए लॉन्ग टर्म आउटकम थाए बट ऑब्जेक्टिव रे शॉर्ट टर्म आउटकम हमको मिली थाए. ओके, जोटा कि देन जनरल डायरेक्शन थाए हम एम्स रे बट हमर ऑब्जेक्टिव रे स्पेसिफिक डायरेक्शन थाए. ओके, देन
आमर आसो एम्स रे कौन ना कैन बी मेजर्ड बोर्ड ओके आमर गोटे उद्देश्य किसी थे आम के इमाजिन के मेजरेबल जिनस आनी पार ना सो इट कैन बी मेजर्ड ओके बहुत बड़ होता है बड़ होता है ओके देन बट ऑब्जेक्टिव कौन ना टाइम बाउंड एंड कैन बी मेजर्ड जोटा कि न्यारो सेन्स जाए देन बियॉन्ड द स्कूल राउंड जोटा कि स्कूल राउंड बियॉन्ड मैंने तार ऊपर लेवल जाऊँगी बट आमर ऑब्जेक्टिव इन दिस स्कूल बाउंड्री जाऊँगी ओके सो देन आम जाना कौन ना फास्ट आमर थाए गोल देन आसो आमर एम्स देन आसो आमर सॉरी देन आसो ऑब्जेक्टिव देन आसो आमर एम्स ओके सो फास्ट कौन ना एम्सटा आमर जीव नेशनल लेवल ले ऑब्जेक्टिव जीव इंस्ट्रक्शनल लेवल ले आउ गोलटा जीव आमर इंस्टीट्यूशन लेवल रे ओके देन ऑब्जेक्टिव हैव टू स्टीम फ्रॉम द एम द गोल आर ब्रेक डाउन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ओके बेसिकली कौन ना ऑब्जेक्टिव कौन करता है ना आमर एम को स्टीम करता है ओके आमर एम को स्टीम करता है बट द गोल कौन करता है ना ब्रेक डाउन करता है ऑब्जेक्टिव को ओके गोल आमर ऑब्जेक्टिव को ब्रेक डाउन करता है जोटा नेशनल लेवल आमर एम्स रहिबो फर्स्ट देन ऑब्जेक्टिव आसीबो आमर इंस्ट्रक्शनल लेवल ले गोल आसीबो आमर इंस्टीट्यूशन लेवल रे ओके सो देन आम जानिबा जनरल एम ऑफ टीचिंग सोशल साइंस कौन रोजी ना acquaintance with the past and present ओके आम पास्ट आउ प्रेजेंट सहित आम कौन ना acquaintance होगी रहबू देन appreciating कल्चरल हेरिटेज आम कल्चरल हेरिटेज को आम appreciating करवा डेवलपमेंट ऑफ सोशल कॉम्पिटेंसी ओके प्रिपेयरिंग एन एनलाइट सिटीजन आम गोटे एनलाइट सिटीजन को प्रिपेयर कर साहाଯ୍य करवा देन ऑलराउंड डेवलपमेंट हम आमर ओके देन यूजिंग लेजर टाइम प्रॉपर्ली जहाँ भी आम बाकी फांका टाइम रोचे आम प्रॉपर्ली यूज कर प्रमोशन ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ओके देन डेवलपिंग द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस ओके जो थे कि कौन ना आम सेंस ऑफ ह्यूमर को आम कौन कर डेवलप कर बिलोंगिंगनेस को ओके देन इंटरपर्सनल सॉरी इंटरनेशनल रिलेशन को भी आम कौन कर प्रमोशन करवा भल भाव में तुले पार भल भाव एनहांस डेवलप कर देन आसला ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग सोशल स्टडी कौन ना प्रमोटिंग सोशल अवेयरनेस एमंग द लर्नर ओके लर्नर मान भर प्रमोट करवा क्या ना सोशल अवेयरनेस को जहाँद्वारा कि सोसाइटी सोशलाइजेशन को आम भल भाव में डेवलप कर सोशलाइजेशन को आम ठीक भाव में परिचालन कर ओके देन कंट्रीब्यूटिंग टू द फॉर्मुलेशन ऑफ द एटीट्यूड एंड वैल्यू ओके जो कि कौन ना आम कंट्रीब्यूशन कर क्या फॉर्मुलेशन कर ना एटीट्यूड को सॉरी आम एटीट्यूड को आम वैल्यू को ओके देन प्रोवाइडिंग लर्नर विथ स्किल लर्नर मान को कौन करें ना स्किल प्रोवाइड करवा देन गाइडिंग सोशल एक्सप्रेशन टू द लर्नर लर्नर मान को कौन करवा ना सोशल एक्सप्रेशन सोशल एक्सपीरियंस गाइड करिबारे साहाय्य करवा सॉरी गिविंग ओके देन 2.2 आसला हमर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव ओके फर्स्ट आसला ब्लूम्स बेंजामिन ब्लूम्स तांको टैक्सोनॉमी से देथिले तांको विषय आमे जानिबा ओके सो कॉग्निटिव डोमेन देथिले अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन साइकोलॉजिकल स्टेट रो हमर तीनटी डोमेन रोची अफेक्ट करथे फर्स्ट होची हमर कॉग्निटिव अफेक्टिव और साइकोमोटर कॉग्निटिव मीन्स कोन ना नॉलेज बा नोइंग को डिनोट करथा है और अफेक्टिव का को ना अंडरस्टैंडिंग और फॉलोइंग को डिनोट करथा है देन साइकोमोटर अप्लाइंग और डूइंग ओके तो बेसिकली वे जब आम मन रखा चेष्टा करवा कॉग्निटिव मीन्स कौन ना आम ज्ञान आम नॉलेज बा पावर अफेक्टिव मीन्स आम अंडरस्टैंडिंग सिचुएशन को डिनोट करे साइकोमोटर मीन्स आम अप्लाइंग डूइंग जहाँ को आम एक्सपीरियंस बा गेन करिपरिबा ताको आम साइकोमोटर डोमेन बोली कही था ओके जोटा कि आम अप्लाई करथाउ डूइंग करथाउ देन कॉग्निटिव डोमेन रिप्रेजेंट बाय बेंजामिन एस ब्लूम हिज फॉलोनेस 1956 रे ओके 1956 रे बेंजामिन ब्लूम्स ए आम साइकोलॉजिकल इफेक्ट को देथिले जो कि अफेक्टिव डोमेन बाय डेविड कार्थवेल एंड 1964 ओके कॉग्निटिव डोमेनटा हमर कि देथिले ना बेंजामिन ब्लूम्स देथिले तार अफेक्टिव डोमेनटा कि देथिले ना डेविड कार्थवेल्स जोटा कि 1964 रे साइकोमोटर डोमेन बाय एलिजाबेथ सिम्पसन आरएचएस डेफ जोटा कि सी कि 1972 रे देथिले ओके देन ए तीन जण मिसिकी आकु डिस्कवर करथिले सो कॉग्निटिव डोमेन कौन ना नॉलेज मेमोराइजेशन रिकॉग्निशन इनफॉरमेशन ऑफ रूल इनफॉरमेशन कॉन्सेप्ट एक्सेट्रा ओके कॉग्निटिव डोमेन रे तार आसो के पार्ट 6टा पार्ट कौन ना नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एप्लिकेशन एनालाइज सिंथेसाइज और इवैल्यूएशन ओके तो एक मन रखा पड़ो कॉग्निटिव डोमेन आसो तार 6टा पार्ट नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एप्लिकेशन एनालाइज सिंथेसिस इवैल्यूएशन आराम से मन रही फास्ट आसो कि नॉलेज नॉलेज आम कौन करवा मेमोराइजेशन करवा रिकॉग्निशन करवा इनफॉरमेशन को गैदर करवा रूल्स को जानिबा इनफॉरमेशन को इकट्ठा करवा ओके कॉन्सेप्ट विषय बुझीबा बट अंडरस्टैंडिंग रे कौन हम ना कॉम्प्रिहेंशन करवा
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज ओके इंटरप्रिटेशन करवा इनफॉरमेशन एंड ट्रांसलेशन करवा कहीं से जिनस को आम बुझा चेष्टा करवा ओके देन एप्लिकेशन कौन यूज अ पर्टिकुलर रूल आइडिया प्रिंसिपल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग ओके एप्लिकेशन द्वारा कौन होता है ना आम पर्टिकुलर किसी रूल आउ आइडियाज को अप्लाई करके आमर कौन ना एथिक्स और प्रिंसिपल हिसाब से आम प्रॉब्लम को आम सॉल्व करवा ओके देन एनालाइज होल इंटू पार्ट्स सब पार्ट को आम कौन करवा एनालाइज करवा सिंथेसिस करवा पार्ट इंटू होल ओके को पार्ट आम एनालाइज कले आम तार न्यू इन्वेंशन कर सिंथेसाइज बोली कही था ये होल इंटू पार्ट इंटू होल देन इवालुएशन कौन ना मूविंग जजमेंट ओके जहाँ भी आम किसी माने एनालाइज करचे सिंथेसाइज करचे तापर आम जजमेंट देवा आम इवालुएशन बोली कही था सब जिन फास्ट आसला नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एप्लिकेशन एनालाइज और सिंथेसिस को लेकिन लास्ट आम इवालुएशन टा दबा आम मूविंग जजमेंट को आम एंट्री करवा ओके देन कॉग्निटिव डोमेन नॉलेज एनालाइज एप्लिकेशन अंडरस्टैंडिंग सिंथेसाइज इवालुएशन ओके एमती गोटे राउंडिंग रे जीव फास्ट नॉलेज देन एनालाइज करवा एप्लिकेशन करवा अंडरस्टैंडिंग करवा सिंथेसाइज करवा इवालुएशन ओके देन अफेक्टिव डोमेन आसिला ओके फर्स्ट कौन अफेक्टिव डोमेन रो रिसीविंग वैल्यूइंग रेस्पोंडिंग कैरेक्टराइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ओके सो फर्स्ट हम जानिबा रिसीविंग अटेंड द स्टिमुलस जोटा कि लिसनिंग उपर जाए रिसीविंग रे कौन किसी जिन को अटेंड करवा रिसीव करवा ओके देन रेस्पोंडिंग रे कौन ना अटेंटिवनेस टुवर्ड द क्लास मोटिवेशन टू बी अटेंटिव एंड एक्टिव ओके रेस्पोंडिंग रे रिसीविंग आम किसी जिन को रिसीव करवा रेस्पोंडिंग रे गोटे अटेंटिवनेस आम रहा जो कि कौन क्लास रे मोटिवेशन पावर आम अटेंटिव वे आम रहा एक्टिव रहा ओके ताको आम रेस्पोंडिंग वे माने रेस्पोंडिंग आम किसी गोटे फेनोमेनन रहा जो कि आम सब जिनस को इगरली आम कौन करवा ना एक्सेप्ट करने को चेष्टा करवा आ रिसीविंग मीन्स कौन ना अटेंड करवा आम कौन जिनस को गोटे स्टिमुली हिसाब से उद्दीपक हिसाब से ओके देन वैल्यूइंग मीन्स कौन इट इनक्लूड्स द वर्थ ऑफ थिंग बिहेवियर ओके जो कि कौन ना वर्थ इट जना पड़ता है गोटे थिंग्स वर्थ को आम जाना चेष्टा करता ओके इट इनक्लूड्स द वर्थ ऑफ द थिंग बिहेवियर ओके मूल्य विशेषत्व जाना चेष्टा करता देन ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट गिव्स सम ऑर्डर टू ईच वैल्यू ओके देन कैरेक्टराइजेशन कौन ना कैरेक्टराइज द नॉलेज ऑफ द वैल्यू सिस्टम ऑफ द पीपल्स वेरी इजिली ओके कैरेक्टराइजेशन हिसाब से कौन ना माने आम वैल्यू को जजमेंट करता ओके नॉलेज वैल्यूर नॉलेज को आम माने कौन सी गोटे नॉलेज आम पाइले तार वैल्यू आम जाना चेष्टा करता ओके सिस्टम हिसाब से जोटा कि कौन ना पे जाना बेस दिन सहज हो पार ओके देन आसला साइकोमोटर डोमेन कौन ना साइकोमोटर डिमिटेशन आसो मैनिपुलेशन आसो आर्टिकुलेशन आसो नेचुरलाइजेशन आसो प्रिसिजन आसो ओके सो फास्ट आम जाना इमिटेशन कौन इमिटेशन हूँ अनुकरण करवा ओके कॉपी द एक्शन ऑफ अनदर अन्यर एक्शन को आम अनुकरण करने को आम इमिटेशन कही था ओके जमती कि पिला माने कौन करते ना छोट छुआ मैंने इमिटेट करते माँ को सी केमी हाथ हलाउं केमी कथा कहते देन सी भी सेमती कहूँ चेष्टा करते लैंग्वेज को इमिटेट करते ओके सो मैनिपुलेशन हवा कौन ना प्रैक्टिस इन एक्टिविटी ओके दक्षतार सहित कौन कर परिचालन करने को आम मैनिपुलेशन कही था देन प्रिसिजन जोटा कि कौन ना सठिकता एग्जीक्यूट स्किल रिलायबल इंडिपेंडेंट ओके सब जिन प्रेसिजन हो ओके देन आर्टिकुलेशन कौन ना आडप्ट करवा स्पष्ट भाव में माने जहाँ भी आम जिन करवा गोटे आर्टिकुलेशन वे आम एक्सप्लेन करवा ओके देन नेचुरलाइजेशन कौन ना ऑटोमेटेड नेचुरलाइजेशन मीन्स हूँ ऑटोमेटेड हिसाब से सी निजक कंप्यूट करवा देन बेनिफिट ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी कौन ये सब जिन पढ़ले जो जितकी सब जिन पढ़ले आम ओके कॉग्निटिव साइको अफेक्टिव देन साइकोमोटर डोमेन ये तीनटा डोमेन आम बेनिफिट्स कौन रोचे ओके दे आर एबल टू क्रिएट एप्रोप्रिएट एक्टिविटी जो कि ये तीनटा डोमेन जो आम परफेक्टली आम निजक प्ले करवा सो आम कौन कर ना एबल टू क्रिएट एप्रोप्रिएट एक्टिविटी ओके एप्रोप्रिएट एक्टिविटी को आम क्रिएट करने को एबल हो पार देन दे आर एबल टू डेवलप रिलेवेंट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी ओके आम विभिन्न प्रकार रिलेवेंट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी को डेवलप कर देन हेल्प द टीचर अंडरस्टैंड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड क्लासरूम टीचिंग ओके जो कि कौन ना टीचर मानक भी हेल्प हम पिला ऑब्जेक्टिव से मेंटेन करें क्लासरूम टीचिंग रे पिला हेल्पफुल हम न्यू न्यू जिन सब जानीपर ओके अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ देन इट हेल्प टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एमंग टीचर्स ओके यहाँ टीचर्स मान कौन क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर हेल्प कर देन लिमिटेशन ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी कौन रोचे ना देयर इज ए नो प्लेस फॉर फ्रीडम ऑफ टू टीचर ओके जो कि कौन ना किसी टीचर मान फ्रीडम रहूना ओके
no place for freedom to the teacher. Then Bloom's given importance to only cognition domain. जोटा कि कौन ना ब्लूम्स कौन करछन्ती ना ओनली कॉग्निटिव डोमेन ऊपर ही इंपोर्टेंस देछन्ती. देयर इज नो क्लैरिटी इन द क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यू. वैल्यू ऊपर किछि एक्स्ट्रा क्लैरिटी बा क्लासिफिकेशन हमर दिया जाय नाही. ओके. देन दे मे आल्सो रिड्यूस द लर्नर इंडिविजुअलिटी. ओके. देन कौन है ना लर्नर इंडिविजुअलिटी ऊपर किछि प्रेशराइज करा जायनी. ओके. क्लासरूम मे यूज द नेचुरल एटमॉस्फेयर. क्लासरूम रे कौन ना नेचुरल एटमॉस्फेयर यूज करिया दरकार. देन इवैल्यूएट द अफेक्टिव डोमेन ऑब्जेक्ट इज वेरी डिफिकल्ट. ओके. सो माने पिला मानकर अफेक्टिव डोमेन को इवैल्यूएट करबा भी डिफिकल्टी हेई पारे. ओके. देन आवर आसिला 2.3 एकेडमिक स्टैंडर्ड एंड लर्निंग आउटकम ऑफ टीचिंग सोशल साइंसेस. ओके. फास्ट हम जानबा कोन लर्निंग आउटकम कोन रहउची. Importance of knowledge and developing understanding. Okay. Making the child understand. ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ ନା making the child understand this environment to enable him to adjust better with his social and cultural environment. Okay. ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଆମର environment ବିଷୟରେ ओके आमर माने सोशल कल्चर एनवायरनमेंट विषय पे आवेयर करा न्यू न्यू जिनस कि माने सहित आक्वेंटेड करा गोटे बेटर अंडरस्टांड वे बुझा पड़ो. ओके. एनवायरनमेंट सहित कपअप करा पड़ो. ओके. जहाँद्वारा कि कौन ना गोटे बेटर वे पे लर्निंग को आक्वायर करेंगे. ओके. देन आसला एनेबल द चाइल्ड अंडरस्टांड सोशल कॉन्सेप्ट लाइक आज फैमिली कम्युनिटी स्टेट एंड नेशन. ओके. पिला कौन करवा अंडरस्टांडिंग माने कैपेबिलिटी को आम एनेबल करवा जो कि कौन बुझा चेष्टा कर केमी पिला माने सोशल कॉन्सेप्ट को लाइक करिया लगे फैमिली कम्युनिटी और स्टेट एंड नेशन को से बुझिया लगे. ओके. तो बेसिकली ये पिलांकर कौन ना लर्निंग साइकोलॉजी उपर आम बेसी मोस्ट ऑफन करवा पिला लर्निंग आउटकम्स उपर लर्निंग साइकोलॉजिकल बा सोशल साइंस उपर. ओके. देन आसला हमर कौन ना एनेबलिंग द चाइल्ड टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड हिम और हर. ओके. वर्ल्ड तो पिला कौन ना पिला एनेबल हे कौन ना माने बुझा चेष्टा करेंगे चारिपार्श्वर आर अपर पार्श्वर जो वर्ल्ड रोचे विश्व रोचे जगत रोचे तादे कौ मैंने माने भल पाँच कौन भल पाना तार निजर किए तार पर किए. ओके. तो देख सोशल साइंस पिला लर्न करने द्वारा पिला सबकिछ जिन विषय आवर हाँक लगे निजर एनवायरनमेंट विषय निजर बेटर एक्सपीरियंस विषय सोशल सोसाइटी विषय. ओके. एडजस्ट हाँक लगे. देन न्यू न्यू सब आइडिया अनलक हाँक लगे. ओके. कम्युनिटी विषय फैमिली विषय स्टेट विषय नेशन विषय ये सब विषय से लर्न करने लगिले विषय न्यू न्यू आइडिया सब पिला मन में आसवाक लगे. ओके. जो एनेबलिंग द चाइल्ड डेवलप ऑन एप्रिसिएशन ऑफ सोशल चेंज. ओके. जहाँद्वारा कि कौन ना पिलाटार एप्रिसिएशन द्वारा तार सोशल चेंज रे तार कौन न्यू न्यू सब आइडिया एनहांस होगा लगे. देन एक्वेटिंग द चाइल्ड विथ सोशल इंस्टीट्यूशन. ओके. हेल्पिंग द चाइल्ड लर्न अबाउट भोकेशनल एक्टिविटी एंड अपॉर्चुनिटी जो कि कौन ना पिलाटी लर्न करने लगे तार भोकेशनल एक्टिविटी और न्यू न्यू अपॉर्चुनिटी विषय सोशल इंस्टीट्यूशन विषय. ओके. तो बेसिकली ये आम जी जानिले ये जो जिन पढ़ले आम क्या विषय ना इंपोर्टेंट नॉलेज एंड डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग विषय. ओके. नॉलेज आउ डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग पिलार एनहांस करने को हेले. ओके. लर्निंग आउटकम हिसाब से आम यही सब जिन पिलार एनेबल करें. ओके. जो कि कौन ना पिला सक्षम हो पार कौन ना निजक एडजस्ट करें बेटर सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट रे. ओके. देन पिलाटी कौन कर अंडरस्टैंड कर कौ जिन को ना फैमिली कम्युनिटी स्टेट और नेशन रिलेशन कौन रोचे. ओके. देन पिलाटी जाना पाइब कौन ना माने सारा विश्व विषय जगत विषय. ओके. तार अराउंड चतुर्पार्श्व कौन चलती कौन ना. देन एक्वेटिंग द चाइल्ड विथ सोशल इंस्टीट्यूशन. ओके. सोशल इंस्टीट्यूशन विषय जाना पाइब एप्रिसिएशन सोशल चेंजिंगनेस विषय जाना पाइब जे तार सी सब जिन जानवर समर्थ हम गोटे जिनस को लर्न कराया जो कि कौन ना सोशल साइंस इंपोर्टेंस बहुत किसी जिन शिखेबारे साहाय्य कर. देन आसला इन कैलकुलेटिंग इन कैलकुलेटिंग डिस्परेबल एटीट्यूड्स. ओके. कौन रोची ना डेवलपिंग एटीट्यूड ऑफ पैट्रियटिज्म कोऑपरेशन टॉलरेंस नॉन वायलेंस फ्रेंडशिप इमोशनल मैच्योरिटी. ओके. देन पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी. ओके. सो फर्स्ट आम कौन करवा ना डिजरेबल एटीट्यूड विषय आम जाना कैलकुलेटिंग करवा कौन ना डेभलप हम कौन ना एटीट्यूड आम पैट्रियटिज्म जोटा कि माने देश प्रति जो मातृत्व भाव. देन कोऑपरेशन. ओके. जातीयता भाव जोटा आम कही था. देन कोऑपरेशन
टॉलरेंस आसीबो, नॉन वायलेंस आसीबो, फ्रेंडशिप शिक्षा को लागिबो, इमोशनल मैच्योरिटी हम भितर आसीबो। ओके, जोटा कि एटा कोन हमरो ना डिजायरेबल एटीट्यूड हम भितर ए सब जिंस हम भितर रहिथिबो, निहारी रहिबा आवश्यक। ओके, इमोशनल मैच्योरिटी हमर आसी जिवो, पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी हमें जानबा को पाइबा। ओके, द व्यू पॉइंट ऑफ द अदर प्रैक्टिस टू एक्सेप्ट अदर ओपिनियन। ओके, जोथरे कि कोन ना मैं अन्य मानकर ओपिनियन को भी बुझिबा को जानिबा पाइबा, बुझिबा को चेष्टा करिबा, आराम से भी बुझी पारिबा। ओके, देन डेवलपिंग एटीट्यूड ऑन एक्ट इन अकॉर्डिंगनेस विथ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल एंड वैल्यू। ओके, जोथरे कि कोन हबो ना हमर न्यू एटीट्यूड हमर डेवलप हबो, जोथरे कि कोन ना मैं डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल और वैल्यू को बुझिबारे समर्थ हबा। देन गिविंग ट्रेनिंग इन डिजायरेबल पैटर्न ऑफ कंडक्ट, कोन ना प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रेनिंग इन करेज। ओके, आमको कोन ना अपॉर्चुनिटी मिलिबो, ट्रेनिंग मिलिबो, हमर न्यू अपॉर्चुनिटी को हम टैकल करिबारे, कोऑपरेशन करिबारे, पैट्रियोटिज्म एंड टॉलरेंस न्यू जिंस को हमें कोन करिबारे ना कंडक्ट करिबारे। ओके, देन द व्यू पॉइंट ऑफ अदर एंड टू मेक दिस ओन कंट्रीब्यूशन। ओके, जोथरे कि कोन ना हम अन्य मानकर व्यू पॉइंट को जानिकी ताको हमें ओन कंट्रीब्यूशन निज हिसाब रे हमें ताको निज लाइफ रे अप्लाई करि परिबा। देन इनिटेटिंग द इंप्रूविंग बेसिक स्किल, कोन ना डेवलपिंग द बेसिक सोशल स्किल लाइक पार्टिसिपेशन इन सोशल लाइफ इज इम्पोर्टाट। ओके, जहाँद्वारा कि कौन ना आम न्यू जिन सब जापर सोशल स्किल शिखा को पाइबा, जो कि कौन ना आम निज लाइफ सोशल लाइफ इम्पोर्टेंस को बुझे सक्षम हवा। देन सेंस ऑफ टाइम, क्रिटिकल थिंकिंग करने लगे, डिसीजन मेकिंग हम एनहांस हम। ओके, सो देन आसला एकेडमिक स्टैंडर्ड एनईपी नेशनल पॉलिसी एजुकेशन रे 1986 रे टाइम ऑफ द पीएम सेमटी इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी फर्स्ट एनईपी। ओके, देन टाइम ऑफ पीएम श्री राजीव गांधी सेकेंड एनईपी, जोटा कि आमर एनईपी 1986 रे। देन एकेडमिक स्टैंडर्ड हिसाब रे कौन होइतिला ना कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करैथिले। ओके, रीडिंग द गिविंग टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन होइतिला, इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड प्रोसेसिंग स्किल थिला, रिफ्लेक्शन ऑन कंटेम्पररी इश्यू एंड क्वेश्चनिंग थिला। ओके, मैपिंग स्किल भी थिला, एप्लिकेशन एंड सेंसिटिव इश्यू ऊपर आलोचना भी होइतिला। ओके, सो ये सब जिंस एकेडमिक स्टैंडर्ड अंडर रे आसुची। फर्स्ट आम जानिबा कोन ना कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रे कोन ना सब्जेक्ट टॉपिक आउ अंडरस्टैंडिंग। सब्जेक्ट टॉपिक रे कोन आसुची ना कीवर्ड्स आसुची, की ऑफ कॉन्सेप्ट आसीबो, स्टेटमेंट आसीबो, जोथरे कि हमर बिटवीन ने आसीबो कोन ना प्रोसेस, एक्टिविटी, रोल प्ले, डिस्कशन एंड प्रोजेक्ट। बट अंडरस्टैंडिंग ना हमरा एक्सप्लेनिंग करिया लागिबा। ओके, एग्जांपल दबा, रीजन दबा, क्लासिफिकेशन दबा, सिमिलारिटी देखैबा। ओके, डिफरेंस कौन रोज देखैबा। बट सब्जेक्ट टॉपिक रे हमरे तीनटा जिंस रहइबो, गोटे स्टेटमेंट, की कॉन्सेप्ट आउ कीवर्ड। ओके, बट अंडरस्टैंडिंग रे हमको वेराइटी प्रकार जिंस को कवर अप करिया को पड़िबो, लोक मानको एक्सप्लेन करिया को पड़िबो, एग्जांपल देबा को पड़िबो, डिफरेंसेस देबा को देखैया को पड़िबो, सिमिलारिटी जणैया को पड़िबो। ओके, सो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रे ए सब जिंस को मेंटेन करिया को पड़िबो। तार प्रोसेस रे फर्स्ट हमें एक्टिविटी देखिबा, देन रोल प्ले, देन डिस्कशन, देन प्रोजेक्ट मेथड। ओके, सो देन असला 2.4 रे कोन ना रिकमेंडेशन ऑफ कोटरी कमिशन 1964 66। ओके, सो फर्स्ट हमें जानिबा 64 सिक्स कमिशन, जोटा कि रिकमेंडेशन कोटरी कमिशन हिसाब रे सिक्स कमिशन आको में सिक्स कमिशन बोली कहि थाउ, अपॉइंटेड 15 जुलाई 1964 रे हितला। देन चेयरमैन के थिला डीएस कोटरी, दौलत सिंह कोटरी। रिपोर्ट सबमिशन 1966 रे हितला। ओके, सो देन हमें जानिबा ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग सोशल स्टडी कौन रही कोटरी कमिशन ना इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करवा। ओके, प्रमोटिंग सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करवा। ओके, देन डेवलपिंग सोशल मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू। एम्स ऑफ टीचिंग एंड सोशल स्टडी कौन रही टू हेल्प द स्टूडेंट एक्वायर नॉलेज फॉर देयर एनवायरनमेंट, पिला मानक हेल्प करबा न्यू नॉलेज को एक्वायर करिबारे, तांको एनवायरनमेंट वाइज रे तांको अडॉप्ट होबारे। ओके, टू डेवलप गुड सिटीजन एंड इमोशनल इंटीग्रेशन। ओके, गुड सिटीजन और इमोशनल इंटीग्रेशन को डेवलप करिबारे सहायता करिबा। ओके, देन एम्फसाइज ऑन नेशनल वर्ड एंड यूनिटी। ओके, टू अंडरस्टैंड ह्यूमन रिलेशनशिप ए सब जिंस को एनहांस करिबारे हमर एम थिला कार ना टीचिंग ऑफ सोशल स्टडी कोठरी कमिशन। ओके, सो देन असला रिकमेंडेशन ऑफ एनईपी नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 1986 एनसीएफ 2005 एपीएससीएफ, जोटा कि हमर 2011 ने आसीथिला। ओके, सो तार रिकमेंडेशन कौन रहिथिला ना एनईपी 1986 रे टाइम ऑफ सेथिरे भी श्रीमती इंदिरा गांधी थिले फर्स्ट एनपी रे, देन एथिरे भी टाइम ऑफ श्री राजीव गांधी थिले सेकंड एनपी रे। ओके, सो रिकमेंडेशन ऑफ एनपी 1986 रहिथिला टू ब्रिंग अबाउट फिजिकल इमोशनल एंड एथिकल इंटरगेशन, जो थे कि कौन ना आम फिजिकल इमोशनल एथिकल इंटरगेशन को
ब्रिंग करिपारिबा ओके भल भाव ताको आमे आडिक्वेट करिपारिबा ओके टू इनकलकेट द इंडिविजुअल स्पिरिट ऑफ ट्रूथफुलनेस टेम्परेंस एंड करेज ओके देन to cultivate a spirit humanity simple living self test service sacrifice okay এই সব জিনিস রিকমেন্ডেশন কোথায় ছিল না ন্যাশনাল পলিসি এডুকেশন নে যে স্টুডেন্ট মানকৰ কেউ কেউ জায়গাରେ ସବୁ କେଉଁ କେଉଁ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟରେ ବା କେଉଁ କେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରେ କେଉଁ କେଉଁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସ୍କୋପ୍ ଅଫ୍ରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସବୁ କିଛି ପ୍ରକାର ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ସରି ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମେ କରିପାରିବା ଓକେ ଦେନ୍ कौन हम ना टू प्रमोट स्टडी क्लासेस डेवलप प्राइड इन नेशनल कल्चर एंड हेरिटेज ओके जो कि कौन ना आम क्लासेस रे आम नेशनल कल्चर को हेरिटेज को प्रमोट करवा ओके स्टडी माध्यम देन बैकग्राउंड ह्यूमैनिटी सोशल साइंस एसेंशियल रिटेनिंग एंड ह्यूमन टच उपर भी स्कोप पकेबा ओके टू क्रिएट द स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड ओके जो कि कौन ना भ्रातृत्व भावना में माने जो स्पिरिटा को क्रिएट करिया ये जो डेवलपमेंटा को क्रिएट करिया को लागिबा ओके देन सॉरी ओके देन आसला हमरो रिकमेंडेशन ऑफ एनसीएफ 2005 टू लर्न रेस्पेक्ट डिफरेंसेस ओपिनियन इन लाइफस्टाइल कौन ना रिकमेंडेशन एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क हिसाब रे ओके रिकमेंडेशन ऑफ एनी भी गला हमारा रिकमेंडेशन ऑफ एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क हिसाब रे 2005 रे कौन ना आम लर्न करवा रेस्पेक्ट विषय डिफरेंस ओपिनियन लाइफस्टाइल विषय कल्चरल प्रैक्टिस विषय ओके ग्रोअप हवा कौन डिफरेंट एक्टिविटी रे रेस्पॉन्सिबल रे रिफ्लेक्टिव रे मेंबर ऑफ सोसाइटी हिसाब रे आम निजको ग्रोन अप करेबा देन एक्वायर प्लेजर रीडिंग बाय प्रोवाइडिंग देम विथ एंजॉयबल रीडिंग मटेरियल ओके ये सब जिनस आम निजको कौन करबा ना एक्वायर करेबा नॉलेजेबल जिनस सब जानिया को चेष्टा करबा ओके रीडिंग करबा देन एंजॉयबल मटेरियल सब एक्वायर करबा देन टू क्वेश्चन एंड एग्जामिन रिसीव्ड आइडिया इंस्ट्रक्शन एंड प्रैक्टिस ओके जो कि कौन आम एग्जामिन करबा न्यू न्यू आइडियाज इंस्ट्रक्शन करबा ओके प्रैक्टिस भी करबा सो देन एनसीएफ रो सब ये सब था रिकमेंडेशन ये सब जिनस थिला देन आसला रिकमेंडेशन ऑफ एपीएससीएफ एससीएफ 2011 रे कौन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल साइंस टीचिंग आर डेवलप स्किल एंड रीजनिंग एक्सप्लोरिंग कॉजिशन इन सोशल कॉन्टेक्स्ट ओके जो कि कौन ना तार ऑब्जेक्टिव कौन थिला ना डेवलप करिया सोशल स्किल को रीजनिंग को एक्सप्लोरिंग करबा ओके कॉजिशन को सोशल कॉन्टेक्स्ट को एक्सप्लोर करबा ए सब जिंस ऊपर बेसी फोकस करूथला देन रिलेट द इमीडिएट सोशल डेवलपमेंट टू बॉर्डर ग्लोबल ट्रेंड एंड वाइस वर्सा ओके जो कि कौन ना रिलेट करथला कोटा ना इमीडिएट सोशल डेवलपमेंट रे ओके इमीडिएटली हिसाब रे सोशल डेवलपमेंट को एनहांस करिबा रे ओके बॉर्डरली ग्लोबल वाइज रे हमें कौन करबा ना गोटे ट्रेंड को सेट करिया रे वाइस वर्सा हिसाब रे ओके देन अंडरस्टैंड वेराइटी ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस अक्रॉस टाइम एंड स्पेस ओके अंडरस्टैंड करबा कौन ना वेराइटी ह्यूमन एक्सपीरियंस को टाइम और स्पेस हिसाब रे ओके देन अंडरस्टैंडिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग एट सोशल एंड वर्ल्ड कौन मल्टीपल पर्सपेक्टिव हमें सोशल वर्ल्ड को लुक करबा कोथरे ना फास्ट असला हमर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रेhension देन इन्फॉर्मेशन स्किल और एक्सप्लेनिंग ओके सो फास्ट आम जाना कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कौन आछि ना सिमिलरिटी डिफरेंसेस गिविंग एग्जांपल्स एक्सप्लेनेशन क्लासिफिकेशन एक्सेट्रा ओके तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रे आसला कौन ना सिमिलरिटी कोथरे ना डिफरेंसेस रे आसीबो गिविंग एग्जांपल्स रे एक्सप्लेनेशन रे क्लासिफिकेशन रे ओके बट इन्फॉर्मेशन स्किल कौन आछि ना गैदरिंग इन्फॉर्मेशन को गैदर करबा रेकॉर्डिंग करबा टैबुलेशन करबा इन्फॉर्मेशन ऑफ टेबल मेकिंग प्रेडिक्शन करबा से हिसाब रे ओके देन कॉम्प्रेhension कौन आसीबा ना रीडिंग करबा कॉम्प्रेhensioning करबा रिफ्लेक्शन करबा इंटरप्रिटेशन करबा एनालाइज करबा ए सब कॉम्प्रेhension रे आसीबो एक्सप्लेन रे कौन ना काउशन ओपनिंग रीजनिंग ओके सो ये सब जिनस हमर कोथरे आसिले ना मल्टीपल पर्सपेक्टिव हो हमर सोशल वर्ल्ड रे ओके देन आम जाना 2.5 रे वैल्यू ऑफ टीचिंग सोशल साइंसेस ओके ये जो सोशल साइंसेस में पढ़ुचे तार वैल्यू कौन रोचे टीचिंग रे तार वैल्यू कौन रोचे ओके देन सोशल वैल्यू इन्फॉर्मेटिव वैल्यू कल्चरल वैल्यू वोकेशनल वैल्यू मोरल वैल्यू ट्रेनिंग फॉर कोऑपरेशन नेशनलिस्ट वैल्यू इंटरनेशनलिस्टिक वैल्यू इंटेलेक्चुअल वैल्यू साइंटिफिक एटीट्यूड ओके सो फास्ट हम जाना कौन सोशल वैल्यू
social value कौन है? Social study socialize the child. He identify himself within the struggle and sacrifice of the race. The child learn to adjust in the social life. Okay, social value हिसाब रे कौन ना पिलाटी स्ट्रगल करिवो, निजको सोशलाइज हिसाब रे निजको गढ़ी तोलिबो. ओके, तार निजर आइडेंटिफाई से निजे क्रिएट करिवो, निजर सैक्रिफाइस को निजे से एक्सपीरियंस करिवो. ओके, जादर कि करो ना से निजर एडजस्टमेंट हिसाब रे निजर आइडेंटिफाई से क्रिएट करिक निजर एबिलिटी को से जानवाक चेष्टा करिवो. ओके, जो कि कौन ना से सोशल वैल्यू सहित निजर मोराल्स आ एथिक्स वैल्यू को भी से गैदर करि पारिबो. देन इन्फॉर्मेटिव वैल्यू कौन ना सोशल स्टडी इज द हाउस ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड वैल्यू. ओके, सोशल स्टडी होची गोटे गंता घर कहार ना इन्फॉर्मेशन रो वैल्यू रो. इट गिव्स इन्फॉर्मेशन ऑफ डिसिप्लिन, जोटा कि हमको कौन ना डिसिप्लिन सिखाई थाए. जोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री ए सब आम जानवा पाई था इनफर्मेशन सोशल सोशल स्टडी द्वारा बा सोशल साइंस द्वारा. देन सोशल साइंस द्वारा. ओके, देन आसला कल्चरल वैल्यू कौन ना सोशल स्टडी एक्सप्लेन अबाउट द एक्जिस्टिंग स्टेट थिंग्स रिलीजन एक्सेट्रा डिफरेंट कल्चर हाव डिफरेंट सेटिंग. ओके, कल्चरल वैल्यू आम कौन जानता ना आमर विभिन्न प्रकार रिलीजियस हिसाब से. ओके, डिफरेंट कल्चर हिसाब से माने डिफरेंट कल्चर जहाँ सब रोचे ता विषय में नॉलेज गैदर करिया लगी था. कल्चरल वैल्यू रे आम डिफरेंट सेटिंग प्रकार डिफरेंट प्रकार सब रिलीजन आउ आमर कल्चर आमर हेरिटेज कौन रोचे ता विषय एक्जिस्टिंग नॉलेज को एक्वायर करिया लगी था. देन वोकेशनल वैल्यू कौन ना सोशल स्टडी एक्सप्लेन अबाउट द डिफरेंट वोकेशनल प्रेजेंट इन सोसाइटी. एग्जांपल वीवर्स, कारपेंटर्स, ब्लैकस्मिथ, गोल्डस्मिथ एक्सेट्रा. ओके, ये आम कौन ना वोकेशनल वैल्यू जानिया माने शिखिया लगी था, जो कि कौन ना धंदामूलक शिक्षा जोटा आम कही था, जो कि आम माने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी शिखा लगी था, जो कि आम कौन हो पार ना कारपेंटर हो पार, ब्लैकस्मिथ हो पार, गोल्डस्मिथ हो पार. ओके, देन मोरल वैल्यू कौन ना द टीचर ऑफ सोशल साइंस डेवलप अनसेल्फिशनेस करेज द पार्टिसिपेशन अप्रिशिएटिंग नेचर. ओके, मोरल वैल्यू रे कौन मोरल एथिक्स. ओके, जोटा कि आम कौन कही था सिविक्स मोरल एथिक्स आम शिखा लगे केमी आम अनसेल्फिशनेस हवा कि करेजनेस हवा. ओके, पैट्रियटिज्म हवा, अप्रिशिएटिंग नेचर आम रखा. ओके, ये सब जिन मोरल वैल्यू रू मोरल एथिक्स रू ही सोशल साइंस रे ये सब जिन को आम डेभलप करें. ओके, देन आसला ट्रेनिंग फॉर कोऑपरेशन. द सोशल स्टडी डेवलप द थॉट ऑफ ब्रदरहुड एंड कोऑपरेशन. ओके, ट्रेनिंग ऑफ कोऑपरेशन कौन सोशल स्टडी डेवलप करता है कौन ना थॉट ऑफ ब्रदरहुड, जो कि आम भातृत्व भाव कोऑपरेशन भाईचारा भाव को आम एनहांसमेंट करिथाउ बा एई सब जिनसर हमर डेवलपमेंट आसी थाए. ओके, देन नेशनलिस्टिक वैल्यू कौन ना द फील्ड ऑफ नेशनलिज्म शुड बी इनकलकेट. ओके, तो बेसिकली कौन ना नेशनलिस्टिक वैल्यू रे कही थाए ना हमर नेशनलिज्म वैल्यू को आम इनकलकेट कर था, जो कि कौन एग्जांपल ओबीडियंस फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स. ओके, फ्रीडम रिलीजन एक्सप्रेशन एक्सेट्रा. ओके, जो कि कौन ना आम जातीयता भाव निज मध्य रखी था, जो कि आम नेशन प्रति ओबीडियंट होकर रही था, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को बा नॉर्म को लॉज को आम फॉलो करी था, फ्रीडम ऑफ आमको आम फ्रीडम रखी था आम चिंताधारा रे भी बट आम वर्क रे भी कौन ना रिलीजन प्रति एक्सप्रेशन प्रति. ओके, देन आसला आमर कौन ना इंटरनेशनलिस्टिक वैल्यू कौन रोची. This is the most commonly expressed as an appreciation for the diverse culture in the world and a desire to world peace. Okay, इंटरनेशनलिस्टिक वैल्यू रे कौन होता है एटा मोस्ट कॉमनली एक्सप्रेस्ड वैल्यू, जो कि कौन ना आम डिजायर करता वर्ल्ड पीस को. ओके, जो कि आम कौन ना सारा वसुधैव कुटुंबकम जोटा आम कही था. ओके, से आम कौन से वैल्यू को शिखा लगी था समस्ते आमर आम हो समस्त. ओके, जो कि आम डिजायर करता कौन ना वर्ल्ड पीस को माने विश्व शांति को आम डिजायर करता. ओके, द डेवलप ऑफ द थ्रोट बीइंग सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड एमंग द लर्नर. ओके, जो कि आम प्रत्येक सिटीजन समस्त किसी शिखा लगी था, समस्त किसी न्यू जिन लर्न करें अन्य मानक भी किसी जिन शिखे था. ओके, देन आसला आमर कौन इंटेलेक्चुअल वैल्यू. ओके, मैन ब्रेन ऑलवेज गोज इन द सर्च ऑफ समथिंग न्यू. ह्यूमन माइंड सब कौन ना किसी न्यू किसी नूतन खोज लगी पड़ता है. ओके, सर्च करते हैं कौन ना समथिंग न्यू रे. ओके, देन दिस लीड्स टू अवेयरनेस टॉलरेंस एंड एडजस्टमेंट. ओके, जोटा कि आम कौन ना आम अवेयरनेस द्वारा आम टॉलरेंस द्वारा एडजस्टमेंट द्वारा ही आम एक्वायर कर. देन साइंटिफिक एटीट्यूड. द टीचिंग ऑफ सोशल साइंस डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड एमंग द चाइल्ड. कौन रोचे साइंटिफिक एटीट्यूड ना क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग एक्सेट्रा. ओके, साइंटिफिक एटीट्यूड आमर ए ही डेवलप होता है, जो कि आम क्रिटिकल थिंकिंग कर प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रीजनिंग जापर. ओके, ये सब जिन डेवलपिंग जिन आसी जाए. ओके, सो लेट